स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स केयर इमिग्रेशंस आप सबको फैनशो कॉलेज की आज इन्फॉर्मेशन देंगे। और हमारे साथ आज कनाडा की एक ओंटारियो की बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको बोलते कॉलेज के ऑफिसर्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे। मिस्टर परमवीर, हेलो परमवीर, हाउ आर यू? Hi, I'm good. I'm good. How are you? Yes, I am great, and thanks. You are sharing a valuable information today with the Matrix Immigrations and Visa Services staffs, as well as our live viewers on our Facebook, our YouTube channel, Insta, everywhere, right? So, Right. परमवीर बहुत ही कनाडा की एक वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत ही बड़ी कॉलेज है जिसके साथ हम एसोसिएट्स है लास्ट तकरीबन 10 इयर्स के आसपास से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद वो स्टूडेंट्स आज अपनी फील्ड जॉब इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर आईटीज में, बिजनेस में, फार्मेसीज में उनकी फील्ड जॉब वो लोग करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कॉलेज प्लेसमेंट एंड फैसिलिटीज़। और आज हमारा ये हमने बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे परमवीर सर को कम्युनिकेट करने के लिए कि वो आए प्लेटफॉर्म पे और फैंशो कॉलेज के बारे में जनवरी 21 इनटेक में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको सही और कॉलेज की तरफ से परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे। यस परमवीर जी, थैंक यू वेरी मच सर। Welcome. Platform is yours now. Thank you. So what I am planning to do is I made a small presentation on the college, like where I'll try to give you some information about Fanshawe College as a whole, and then we will focus a bit on the admission requirements for different programs that we have available for January and future intakes as well. And then I will also talk a bit about our famous, student services that are available for the college as well. Great, sir. So let me deliver the presentation first, and where I think most of your questions will be answered. And then if you have any further questions on behalf of the students, you can go ahead and ask me those questions, and I'll be more than happy to reply to all the questions. Great, sir. Yes, sir. You can start. Sir. Okay, just give me 1 minute. I'll share my presentation that on me. All right, so I think all of you can see the screen now. So my name is Paramveer Chakravarti, and I work as one of the advisors in the India team of Fanshawe College. So Fanshawe College has got a complete team here working here in India to help students from the South Asian countries to successfully go to Fanshawe College and complete their higher education there. So what I've done here, I've made a small presentation for all of you, and I'll be more than happy to give you information about the college, and then we'll do a Q&A as well. So before I talk more about the college, I'd also like to tell you where Fanshawe College is based. So Fanshawe College, as you know, we are based out of the country of Canada, in the province of Ontario, and in the city of London. So London is a very strategically placed city in the province of Ontario, which is exactly 2 hours from the city of Toronto on one side, and on the other side, it is exactly 2 hours from the city of Detroit in US. The population of the city of London is around 500,000 in the metropolitan area. And it's a very diverse city. 22% immigrant population is there from 140 different languages are spoken in that particular city altogether. London as a city is also known as the forest city of Canada because we have 4+ million trees and 330 kilometers of walking and biking trails with 470+ parks in and around the city. So you'll get a mix. It's not a very big city, and it's neither a very small city. It's a good mix of everything. You're very close to the nature, plus anything and everything that you're looking from within the city, you'll get all kinds of options in that particular city as well. Not only that, London is also one of the fastest growing cities of Canada. It is actually the second fastest growing cities of Canada as well.
The cost of living, if I tell you about the city of London, the average rent for a 2-bedroom apartment will be around $1,087. And London as a city is also well connected to all the other major hubs of Canada. So they have got an international airport in the city of London. There's a train station which connects the city of London to other cities. We have a bus services, which connects the city of London to all the other cities as well. So which is excellent. And very importantly, because I understand, you want to study at Fanshawe College, you want to complete your higher education in Canada, but at the end of the day, everybody is looking for a job. So I'd also Yes. like to inform you that London is also a huge or a large hub for a lot of companies. A lot of Canadian as well as international companies have opened up their hubs in the city of London. Companies like Labatt. Labatt is a beer manufacturing company. Canada Life, 3M. 3M is basically a chemical company. General Dynamics, Cami, Toyota. We know about Toyota. Some technology-based companies like StarTech.com. They have opened up their hubs, and not only that, 14,579 plus companies in the area of food, digital creative, health, manufacturing, and professional services. These are the areas where we have jobs in the city of London as well. So what I've seen with our students at Fanshawe, once they complete their studies, they fell in love with the city, and they ultimately get a job in that particular city only and settle down in the city of London itself. But again, having said that, if you're not finding options in the city of London, do not worry. 2 hours, just take a bus, 2 hours, you're there in the city of Toronto, and you can go there, apply for jobs, apply for interviews and things like that. There's no problem with that. Now, coming to the college, yes, Fanshawe College is one of the public funded institutions. And very important to keep in mind that the college is in its 53rd year. So we started our operations in the year 1967, and we are more than 50 years old in Canada. You should also keep in mind that Canada as a country is not very, it's very young. So it's not very old. It is just over 150 years. And Fanshawe in itself is more than 50 years old. So Fanshawe College has got its own name and its own brand name and fame within the country of Canada. Our main campus in the city of London, which is in the Oxford Street, is huge. It is 110 acre long with 30 interconnected rooms, more than 21,000 full-time students starting at any given point of time, with 7,500 international students from 104 different countries. Our main campus is in the Oxford Street, but apart from that, we have more campuses in the city of London itself. So these are some of the campuses. So there is a campus next to the main campus, which is called Center for Applied Transportation Technologies, which is basically our campus where we are delivering all our transportation related and automotive related programs. We have got our downtown campus. So in our downtown area of the city of London, there are two buildings where we are delivering all our programs related to tourism, hospitality, culinary, arts, design. And this has recently opened in the year 2018 as well. And then in the other building, we have our School of Digital and Performing Arts in the city, in the area of downtown as well. The third campus is our Fanshawe Aviation Center, which is next to the airport, where we are delivering all our aviation and aircraft related programs. And this is the last one, is a recently introduced campus, which is called the London South Campus. It is in the southern part of the city. And this is where we are delivering all of our 2-year postgraduate diploma programs related to business management, business and information systems architecture, healthcare administration management, and there are some 1-year postgraduate diploma programs which are also delivered in the London South Campus as well. Apart from all those 4 campuses in the city of London, we have 3 regional campuses as well. So there is a campus in the city of Simcoe or Norfolk, a campus in St. Thomas and Elgin, and then there is a campus in Woodstock and Oxford as well. So there are some programs which are also delivered in these campuses. These are different cities in and around London, like somewhere between 45 minutes to 1 hour, 15 minutes away from London. But if you have a program which is delivered in any of these campuses, it is highly suggested that you have to stay in those cities and complete their programs there.
as well, because they are not properly connected to the city of London. And if you're thinking that, okay, I'll be staying in London, going to those cities every day and complete my classes and come back, that will not be possible. It is highly, highly suggested that you stay in those cities and complete your program in those cities as well. Right. So after campuses, we talk about learning at Fanshawe. Fanshawe believes in project-based learning. So unlike India, students who have studied here in India, it's always been, because I've also studied here in India only. So I've seen when I went to colleges and universities, it's very theoretical based study, right? Professors would come, give lectures, and then I'll take notes, I'll mug up those notes, write down. But Canada, or specifically in Fanshawe, it is very practical and hands-on based learning. So we believe in project-based learning. You'll receive a lot of in-class and take-home assignments from time to time, which you need to submit on time because there are a lot of scores or credits when you submit the assignments on time. And very importantly, the professors are industry professionals. So professors who are teaching, they are industry professionals. They know what is actually happening in the industry, and they try to give you that practical information when they are delivering their classes. And whenever Fanshawe comes up with any kind of program, whether it is a program related to finance or engineering or IT, they always take feedback from the industry experts and from the community as well. That, okay, fine, if I come up with this program, once the students complete these programs, will they be able to get a job or not? Are there any kind of changes that we need to do in the program so the students can easily get job? So those points are kept in mind before the program is being introduced in Fanshawe, which is very, very important. And that is one of the reasons why our employment rate is very, very good, because it's very practical, and what is needed based on the demand of the job market, they come up with a program or introduce a program accordingly. And that brings me to my next point, the employment rate at Fanshawe. Our employment rate is 90.3% as of this year, and which is considered to be the best among all the public funded colleges in Ontario. Is excellent. And you can find it online, all the information. The International Student Barometer ranked Fanshawe as number one out of Ontario colleges and number two out of 199 institutions in the world for its overall learning experiences. So in terms of learning experiences, we are also doing very good and excellent as well. Now, moving on to the admission process, I'd like to tell you, Fanshawe offers both undergrad and postgrad programs. In undergrad programs, we have got 1 year certificate programs, 2 years diploma programs, 3 years advanced diploma programs, and 4 years undergrad degree programs as well. And in postgraduate area, we have got 1 year PG as well as 2 years PG programs as well. So all the options that you're looking for, you name a program, we will generally have an option available for you, for sure. Now, quickly to tell you about the general requirements for undergrad and postgrad programs. For all our certificate and diploma programs in undergrad, we need 50% in your core subjects in grade 12, and we need academic IELTS of overall 6 and not less than 6 in each band. Apart from that, if you plan to apply for any of our 4 years undergrad programs, then the requirements changes a bit. Generally, we need 65% in your grade 12. And if you're applying for any of our BCom programs, 4 years programs, we will need mathematics separately 65%. And the IELTS scores are also a bit higher. Generally, it's overall 6.5, not less than 6 in each band. Now, coming to the PG programs, whether you're applying for a 1 year or a 2 year PG program, the general requirements would be 50% in your graduation. But for our business and management program, we need 60% in your graduation. And we need academic IELTS of overall 6.5 and not less than 6 in each band. Again, this is just a generic overview, but from program to program, there are some special requirements which we can give you more and more information when you talk to us or talk to Matrix or our experienced counselors at Matrix as well. They'll be able to give you those specific information. Now, what happens, you apply for a program, we check into your eligibility requirements. If you're eligible, the documents comes to the college, the evaluation team in the college evaluate your documents, and if everything is fine, we give you the offer letter. Once you receive the offer letter, you get 21 days to make the fee payment. Once you make the fee payment, your seat gets reserved. And once it is reserved, you can start with your process of application of visa. Because of the present pandemic situation that's going on, we all know about it. We are also accepting Duolingo scores.
For PG programs, we accept a Duolingo score of minimum 125, 125. And for undergrad diploma programs, we need 105 is the minimum requirement. So that's the basic requirement. We are also offering conditional offer letters based on your final year mark sheets or your provisional degrees. Suppose you have completed all the semesters, your final semester mark sheet or your provisional degree is missing, we can give you a conditional offer letter on that basis, but not on the basis of IELTS as of now. But again, please be in touch with Matrix. There may be a bit of changes in terms of IELTS. We are also thinking of giving out, conditional offer letters based on IELTS. But the decision is yet to be taken. But be in touch with Matrix so that you can get more and more or further updated information in this regard as well. Now, coming to your work study process, yes, generally all our programs are full-time programs. We focus a lot on the full-time programs. It's around 25 to 28 hours a week that you have to study in the college. But when you are a student, you can also work for 20 hours a week. So part-time work, you can do 20 hours a week. And if you study for 1 year in Canada, you get up to 1 year of postgraduate work permit. 2 years if you study, you get up to 3 years of work permit as well. And that is one of the reasons why Fanshawe College also offers 1+1 year integrated programs. So if you're going for a PG program, if you've taken a 1 year program, and if you feel, no, I want to do a second program as well, Fanshawe College will be able to offer you that as well. Again, very important, discuss this with your counselors and they can give you more and more information about the programs that can be offered. Now, very important, it's not only the programs and the admission requirements. Students should also get proper services, and that's why Fanshawe College have introduced Fanshawe Care Services. Fanshawe Cares is a department of Fanshawe which provides different kinds of students who wants to study at Fanshawe or to its existing students as well. So one of our flagship services that we provide to all of our students is the arrival services, which is excellent. Arrival services means the moment you land in Canada, whether at the Pearson International Airport in Toronto or London International Airport, there will be an airport greeter who will be greeting you from the college, and then there is complimentary transportation. So you'll be picked up from the college, from the airport, and we'll take you to your home address that you provide us in the city of London, and that's completely taken care of. Accommodation, yes, we can also help you with accommodation options. If you're going or if you've not booked your accommodation, we can find you options for you. You can get in touch with the Fanshawe Cares department well in advance, and somebody from the Fanshawe Cares will be able to help you find or look for accommodation options. Once you land there in Canada, we can also help you with your banking part, setting up your finance, taking you to the nearest bank account, and opening up your bank account. We have student support services. So there are 3 dedicated immigration officer advisors who work in our college to help you with all your queries and concerns. Exchange coordinators, if you're looking for exchange programs, and student life coordinators when you are an existing student of Fanshawe. So if you need any help, if you have any queries or concerns, whether it's adding a second program or suppose you are not performing well in your present program and looking for a change, student life coordinators are there. So please take an appointment, visit them, talk to them. There are online options. You can take online appointments and you can talk to them. They'll be able to help you and guide you as well. Now, coming to the cost for all our international students, generally, the different programs that I've talked about, we have got both like the general cost for all of our programs, both for undergrad and postgrad, is somewhere between $16,000 to $18,000. That's what the fees is. And this fees also include your health and dental insurance, your bus pass, uh, Fanshawe Cares arrival services, computer lab access, student services, and the fees also includes your new wellness center and athletics department as well. If I talk about accommodation options, yes, Fanshawe College also have got accommodation options. So there are homestays which are available where you can live with a Canadian family. On-campus residences are also available. And what I've also seen with Indian students, they generally prefer to stay off campus. So they generally prefer to stay off campus and they book an accommodation accordingly and stay off campus. So that option is also available. Fanshawe College, just to help you prepare on how to get jobs. If you arrive well in advance as a student,
in the city of London, 5 to 7 days in advance. We are also running our programs, which can help you find jobs. There is a program, signature program called Fanshawe Works. And through this program, we can help you, with different things like how to write your Canadian style resumes, cover letters. So there is job search assistant, employment readiness, resume workshops, and all those kinds of things which are available, and you can take advantage of that. And finally, before I close, I'd also like to tell you that Fanshawe College has got its huge career services department, which works day in and day out to help students get or find, internships, co-op positions, and jobs as well. So very, very important. When you're a student of Fanshawe, please be in touch with your career services department and take full advantage of all their services. We are available everywhere. So you can see we are available on Facebook. So you can follow us on Facebook. We are on LinkedIn. We are on Instagram. We have our own YouTube channel. So you can subscribe to that. And you can also join us on WeChat. I think WeChat doesn't work here in India, but on all the other platforms, you can find us and we'll be able to help you. And finally, yes, this is our international center staff. So a huge staff, as you can see. And the international center is working only to help you guys. So students who are traveling internationally, who are traveling from different countries of the world, these guys are there only to help you all. So please do not feel that you are on your own. If you have any problems, any queries when you are studying or when you are an existing student of Fanshawe, please take an appointment, talk to someone at the International Center, and somebody will be able to help you and guide you. So that is it from my presentation. So if you have any specific questions or queries, you can ask me. If you have any queries, I'll be more than happy to help you with all your queries and concerns. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू परमवीर जी। आपने फैनशो Welcome. कॉलेज ओंटारियो के बारे में बहुत सी डिटेल्स हमको बताई है। आपने रेसिडेंस के बारे में बताया, आपने ड्यूओलिंगो और आइल्स के बारे में बताया, आपने रिक्वायरमेंट्स बताई, आपने फैनशो कॉलेज में कैसे अप्लाई की जाता है वो बताया, कैसे वहाँ पे स्टडी की जाती है, फैनशो कॉलेज कैसे स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से ले जाने के बाद अपने पास कैसे उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देती है, ये फैसिलिटीज़ आपने बताई, बहुत सी सारी डिटेल्स बताई। इसके हिसाब से हमारे जो व्यूअर हैं यूट्यूब में, उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, तो हम उस पर जाएंगे सर। जी। राइट। अच्छा, हमारे पास अभी एक Sure. क्वेश्चन आया है सर। सुहांगी जानी, उनका ब्रदर है जय जानी, ये ऑलरेडी कनाडा ठीक है। के अपने फैनशो कॉलेज में ही ग्रेजुएट हुआ। वो मोटिव पावर ठीक है। के रिगार्डिंग कोर्स में वहाँ से उसने डिप्लोमा ख़त्म किया, उसकी ही सिस्टर है। तो उसको जनवरी के लिए ये कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कौन से मोटिव पावर टेक्नीशियन के बारे में ही? यस सर। ठीक है। हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं बता दूंगा। मोटिव पावर टेक्नीशियन हमारे पास एक प्रोग्राम है, अंडरग्रेड डिप्लोमा है, 2 साल का प्रोग्राम है। ये दोनों एरियाज में हम डिलीवर करते हैं। देयर इज मोटिव पावर टेक्नीशियन ऑटोमोटिव एंड मोटिव पावर टेक्नीशियन डीजल। रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज इट इज अंडरग्रेड प्रोग्राम, वी नीड 50% in your with a science background in grade 12. So मुझे core subjects में TCM में 50% चाहिए और mathematics में separately 50% चाहिए और academic IELTS overall 6, not less than 6 in each band चाहिए। अगर आप eligible होते हो, please get in touch with one of the matrix counselors and he or she will be able to look into the status of the program. Hopefully the program, one of them is still available and you can go ahead and apply for the program. Okay. थैंक यू। तो सुहांगी जी, आपको आंसर मिल गया होगा आपका क्वेश्चंस का, और आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। सो फैनशो कॉलेजेस आर वेलकमिंग टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम यू। तो आप मैट्रिक्स की किसी भी टीम से और हमारे किसी भी ब्रांच से आप कम्युनिकेट करके अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन है हमारे पास कि आई एम गिवन ड्यूओलिंगो टेस्ट एंड देन आई विल इफ आई विल गेट दैट वीजास, तो मेरे को वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद कोई फिर से इंग्लिश टेस्ट वगैरह की एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि आई एम डायरेक्ट एलिजिबल ऑन माय डायरेक्ट क्लासेस? Thank you for the question.
देखिए, मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, डुओलिंगो के बेसिस पे फैनशॉ कॉलेज आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देगा। ओके। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जब ऑफर लेटर मिलने के बाद आप जब वीजा के लिए अप्लाई करोगे, तो आईआरसीसी ने हमें बहुत क्लियरली बता दिया है कि आईआरसीसी डुओलिंगो स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको वीजा अप्लाई करने से पहले आईएल्स क्लियर करना ही है, आईएल्स के स्कोर ओके, लाना ही है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अगर आप अप्लाई करके आपको वीजा मिल जाता है तो फिर से कोई इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत नहीं, पर वीजा अप्लाई करने से पहले डुओलिंगो के बेसिस पे आप नहीं कर सकते वीजा के लिए अप्लाई। ग्रेट। तो आपने ये बहुत सी अच्छी चीज बताई परमवीर जी, कि ड्यूओलिंगो टेस्ट पे एडमिशन तो हो जाएगा, और जैसे हमारे हाँ जी, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि कॉलेज में जाके आपको कोई और एग्जाम नहीं देनी है, लेकिन एज पर द ऑफिसर रिकमेंडेड आप आईएल्स के साथ ही वीजा की फाइल रखिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए वीज़ा सक्सेस भी अच्छा रहेगा, और वहाँ पर जाने के बाद आपका इंग्लिश में अगर बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो आप अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। सो दिस हाँ जी, इज रिकमेंडेड टू अस, सो प्लीज गिव नॉट अप्लाई वीजास ऑन ओनली बेस ऑफ डिओलिंगो, उसके साथ में भी आप आयल्स कर दो, क्योंकि अभी आयल्स के सेंटर भी खुल चुके हैं इंडिया में, तो आप आयल्स कर सकते हो। यस, एब्सोल्युटली यस एब्सोल्युटली। सर, ओके। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, वो पूछ रहे हैं कंडीशनली अगर मेरे को जान 21 में अप्लाई करना हो, मैंने अभी आइल्स जी, दिया है, तो क्या मैं फेंशो कॉलेज में कंडीशनली अप्लाई कर सकता हूँ? आप कंडीशनली अप्लाई अभी तक नहीं कर सकते, क्योंकि आईएल्स मैंडेटरी है। ओके, बिना आईएल्स के हम आपको कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं दे सकते। ओके। बट हम इस लाइन पे भी सोच रहे हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे आईएल्स सेंटर्स अभी नहीं खुला है, तो होपफुली मैं वही आपको प्रेजेंटेशन में भी बता रहा था कि बी इन टच विथ मैट्रिक्स। यस, नेक्स्ट वीक में हम कुछ इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को और कैसे मदद कर सकते हैं। तो होपफुली कुछ अपडेट आ सकता है, कि हम आइल्स कंडीशनल, आपने अगर आइल्स की बुकिंग ऑलरेडी कर लिया है और उसका यस, प्रूफ हमें दिखा देते कि हमने ओके, बुकिंग कर लिया है इस डेट में हमारा, तो उसके बेसिस पे हम आपको कंडीशनल ऑफर दे सकते हैं। अभी तक ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मैट्रिक्स के टच में रहिए, यस, यस, एंड यस। दे विल बी एबल टू अपडेट यू फॉर श्योर। ग्रेट सर, बट ग्रेट अभी सर। तक कुछ नहीं है। हाँ, सही है। तो यस स्टूडेंट्स, ऐसा फेंशो कॉलेज थोड़ा पॉजिटिव है आप सबके लिए, जो जो कंडीशनली अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन उसका ऑफिशियल न्यूज़ के लिए आपको एक आध वीक और वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसका कुछ चेंजेस होगा, वी विल लेट यू नो अबाउट इट। अभी सर आइल्स के अलावा कोई कंडीशन है, अगर किसी ने आइल्स दिया है लेकिन उसका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट्स बाकी है, तो वो बेसिस पे वो Absolutely. कर सकता है क्या कंडीशनली सर? यस, ओके, एब्सोल्युटली यस, मैंने परफेक्ट, बोला है कि परफेक्ट। आप, अगर आपका फाइनल मार्कशीट मिसिंग है, आपको नहीं मिला है, या प्रोविजनल यस, डिग्री मिसिंग है, उसके बेसिस पे आप, हम आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत जैसे ही बढ़िया। आप अपना फाइनल मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा कर दोगे, हम साथ साथ आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो जो स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी आइल्स है, उनके पास अगर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट्स नहीं है, और वो लोगों स्टूडेंट्स को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही, मतलब फैंशो कॉलेज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज इन ओंटारियो स्टेट। तो आप तुरंत अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो, और उसके बेस पर आपको आगे जाके पूरा इंफॉर्मेशंस वगैरह भी मिला जाएगा, और आपका जो लेटर होगा कंडीशनली, वो अनकंडीशनल हो जाएगा। सो यस, यू कैन अप्लाई विद द बेस ऑफ योर आइल्स। यस, आइल्स होना चाहिए, लेकिन तो इसके बेस पर आप कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, अब ये भी कर सकते हो कि आपको अगर लग रहा है कि आईएल्स के डेट मुझे काफी टाइम बाद मिल रहा है, हम्म, अभी मेरे को 15 दिन के बाद का डेट मिल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो डू डुओलिंगो, क्योंकि हम डुओलिंगो के बेसिस पे भी ले रहे हैं। तो अच्छा, डुओलिंगो देके आप अपना सीट रिजर्व कर लो पहले, सही बाद है। में आप आईएल्स लिख के हमें जमा कर देना, तब वो भी हो सकता है, दैट कैन बी डन। ओके सर, ओके सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने, और ये बहुत क्लीन कर दिया द डिफरेंस बिटवीन ड्यूलिंगो, डिफरेंस बिटवीन आईएल्स, और आपको कैसे करना है सर, बहुत बढ़िया। हमारे पास एक और स्टूडेंट्स है, वो बोल रही है कि आई एम 12th पास स्टूडेंट्स विथ 62 परसेंटेज इन 2019 with biology. What is the programs available for me for Jan 21?
ठीक है, Jan 21 में if you're looking for health related programs, so most of our health related programs are available for September intake, but there are a couple of them. You can apply for office administration health services. That's one program. If you want to apply for our human foundation related programs like early childhood education, personal support worker, development service worker, so you can apply for those programs as well. But something specific to health, those programs are only available for September, but otherwise these options are available. You can go ahead and apply. But again, you talk to counselor matrix. They know which are the exact programs open at the point of time, because we are receiving applications from across India. So every day seats are getting filled up. तो अब जल्दी से जल्दी काउंसलर से बात कीजिए और वो आपको exactly बता पाएंगे कौन से programs available हैं. बहुत बढ़िया. तो वो स्टूडेंट्स के जो 12th पास है विथ बायोलॉजी और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत वो फैंशो में अप्लाई कर सकते हैं. देयर आर कपल ऑफ कोर्सेज विद अंडरग्रेड्स. तो उनकी डिफरेंट चॉइस के लिए आप हमारी किसी भी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी भी ब्रांच में जा सकते हो आप गुजरात में, और हम आपको वो ऑप्शंस वगैरह फैंशो में से अवेलेबल होके दिखाएंगे. क्योंकि ये फैंशो कॉलेज बहुत बड़ी चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. तो अगर समझ लीजिए आज हमने जो चॉइस दिखाया आपको, वो शायद हो सकता है 1-2 दिन में फिल हो जाए, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन होती रहती है इस कॉलेज में. ये डिमांडेबल कॉलेज है बहुत सी. तो फिर अगर आप बाद में सोच के आएंगे तो वो शायद वो सीट नहीं मिले आपको, वो कोर्स नहीं मिले, है ना. तो बेटर है आप अवेलेबल कोर्स, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल होता है उनका, और वो पोर्टल पे एवरी टाइम वो लोग अपडेट में रहते हैं कॉलेज के साइड से. तो कोर्सेज वो फुल होते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं, तो आपको राइट चॉइस उस टाइम पर मिलेगा. थैंक यू. तो आप उसके लिए सर. अच्छा, हमारे पास दूसरा एक क्वेरी आया है कि अगर मैं Jan 21 में ऑनलाइन पढ़ता हूँ, अगर उसके बाद मेरा AIP2 यानी स्टेज 2 हम जिसको बोलते हैं सर, अगर वो रिजेक्ट होता है तो कितनी फीस मेरे को रिफंड मिलेगी? देखिए, Jan 21 का अभी तक कुछ भी अपडेट हमारे पास नहीं है ना. IRCC ने कोई अपडेट दिया Jan 21 के लिए, ठीक है, और रिफंड के लिए. बट ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि सितंबर 2020 में जिनको AIP ऑलरेडी मिल गया है स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में अगर उनका वीजा रिजेक्ट हो गया है, वो हमारे वेबसाइट में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है रिफंड पॉलिसी में. सो इफ यू इन्फॉर्म अस विद इन 10 days after your visa is rejected in your stage 2, then you will get the entire amount back. Only $250 will be deducted as processing fee, और वो maximum December 18 तक होगा. उसके बाद अगर आपको डिसीजन आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक सेमेस्टर पूरा खत्म हो जाएगा. 18 दिसंबर तक आपको हमें बताना होगा, लेकिन 10 दिन के अंदर. ओके. तो सर आप ऐसा सोचते हो कि अगर वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है और उसका A2 होता है, फिर भी आप फीस वापस करेंगे उसको? हाँ, अब देखिए हमारे उसमें लिखा हुआ है. यस सर. तो बहुत बढ़िया. अगर स्टेज 1 में सितंबर में अगर स्टेज 1 में AIP मिल गया है और बच्चे ने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद स्टेज 2 वीजा रिजेक्शन हो गया है, सो वी विल रिफंड द अमाउंट by deducting $250 as processing fee. Rest of the amount will come back, but हमें 10 दिन के अंदर ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और लास्ट डेट उसका है 18 दिसंबर. उसके बाद अगर कुछ भी डिसीजन आता है तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तब तक. बहुत बढ़िया. फॉर मोर इंफॉर्मेशन अगेन प्लीज चेक आवर वेबसाइट fanshawe.ca and go and check out the refund policy. वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है सब कुछ डिटेल में. ग्रेट सर. तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप फैंशो कॉलेज में सितंबर 20 में अगर आपके पास AIP आया है पूरे इंडिया में से कोई भी एजेंट के थ्रू, तो आप प्लीज़ ऑनलाइन पढ़िए, क्योंकि दिसंबर तक अगर आपका AIT2 का डिसीजन कुछ भी हो, नेगेटिव हो, फिर भी कॉलेज आपको $250 काट के फीस वापस करेगी. उसके टर्म्स एंड कंडीशन है जो उनकी वेबसाइट, जैसे ऑफिसर बोलते हैं, हमेशा आपको कॉलेज की वेबसाइट में से ही अपडेट इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो आप अपना पूरा ध्यान कॉलेज की वेबसाइट, न्यूज़, कॉलेज की जो वेबसाइट है उसको सर्च करने में लगाइए, तो आपको लेटेस्ट और सही इंफॉर्मेशन मिलेगा हर टाइम. तो ये अच्छा. और Jan 21 का, जैसे हमारे एक स्टूडेंट का सवाल था, Jan 21 के लिए अभी ऑनलाइन रहेगा कि क्लास स्टार्ट होगा, ये अभी डिसीजन नहीं है.
ठीक है, तो आप जान 21 के लिए क्योंकि अभी ये पेंडेमिक के हिसाब से, कोरोना वायरस के हिसाब से, कोविड-19 जिसको कहा जाता है, उसके हिसाब से जो रिव्यू है वो गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट वहाँ की सिचुएशन देख के रिव्यू लेगी। तो जैसे वो भी न्यूज़ अपडेट होगा, आप फैनशो कॉलेज की वेबसाइट में तुरंत वो अपडेशन पा सकते हो। तो ये हमारा मानना है। अच्छा सर, बहुत ही एक अच्छा स्टूडेंट्स है, शायद आप थोड़ा उसमें आंसर दे पाए। स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला है कि मेरे को पीजी प्रैक्टिकल एलिमेंट करना है फैंशो में से, जान के लिए मैं सोच रहा हूँ, या फिर यूनिवर्सिटीज में मैं मास्टर करूँ मैकेनिकल में, दोनों में से उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, उसका ये क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए, ये डिपेंड करता है आप क्या लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो colleges in Canada provides you with postgraduate diploma programs, whereas universities provide you with master's degree programs. Now, master's degree programs in universities are generally long-term and research-based. So, if your long-term aim is to complete your master's, उसके बाद आप करना चाहते हो PhD, and then you want to get into postdoc, और आपको research करना है, तो मैं generally हमेशा बोलता हूँ go to university and complete it. But on the other end, college programs are hands-on, practical एंड जॉब रेडी प्रोग्राम्स। ये 3 की एरियाज है। सो कोई भी आप कॉलेज में प्रोग्राम्स करोगे वो बहुत बहुत प्रैक्टिकल रहता है। सो आपका लॉन्ग टर्म में क्या एम ये है कि मैं अपना स्टडीज कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल गेट इनटू अ जॉब, देन कॉलेज प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी मच आइडियल। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, वो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कंप्लीट करके दे कम टू अ कॉलेज जस्ट टू गेट दैट प्रैक्टिकल नॉलेज, सो दैट वो अप्लाई कर सकते हैं वो जो पढ़ाई उसने किया, he or she can apply it when he or she starts working. So that's what the main aim of a college is. So you have to decide now कि आपको कैसे जाना है। बहुत बढ़िया। तो ये ऑफिसर ने बहुत अच्छा बताया। वो बोलते हैं कि अगर आपको रिसर्च बेस पे जाना है आगे, तो आप मास्टर्स कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल के हिसाब से तैयार होना है, आपको इंडस्ट्री में जाके जॉब करना है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो ये आपके लिए कॉलेज वाला ऑप्शंस थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप प्रैक्टिकल एजुकेशंस वगैरह देगा करके। बहुत ही अच्छा सर आपने क्लीन किया डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी स्टडी एंड द कॉलेज स्टडीज। चॉइस आप पर है, आपको क्या करना है। यू हैव द 2 चॉइसेस आर अवेलेबल, राइट। तो सिलेक्ट आप कर सकते हो। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सर ने हमको बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि ये हमें परमवीर सर बहुत से टाइम से कॉलेज इन या यूनिवर्सिटीज या कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम्स के साथ कोलैबोरेटेड है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टूडेंट के सक्सेस या कैरियर के बारे में फर्स्ट होगी, है ना। तो उसके हिसाब से आप अपना चॉइस ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर। अभी और हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। नेम है सालिनी छगन भाई वाघेला। सी इज आस्किंग अबाउट द रेसिडेंस चार्जेस। उसको वहाँ पर कॉलेज में जनवरी 21 में अगर फैंशो कॉलेज में जाते हैं वो लड़की, तो उसको रेसिडेंस चार्जेस कैसे रहेंगे सर, वो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जनरली मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। अगेन डिटेल में आपको सब कुछ हमारे वेबसाइट में अपडेट किया हुआ है, तो अगर आप फैंशो सी में जाते हैं तो पूरा जनरली क्या है, हमारे पास होम स्टे ऑप्शंस है वेयर यू कैन लिव विद ए कैनेडियन फैमिली। आपको सेपरेटली एक सेपरेट रूम मिल जाएगा, सब कुछ सेपरेट मिल जाएगा। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $900। मैं अकोमोडेशन की बात अगर करूं फॉर वन पर्सन, $900 to $1,000 a month। और ऑन कैंपस रेसिडेंसेस में अगर आप रहते हो तो दैट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली $8,825, and it also includes a $1,200 meal plan. That is also included. But मैंने ये देखा है इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर, whoever Indian students are studying in a college, generally they prefer to stay off campus, where they can rent a place and 2-3 friends can stay together. Because London is very much a student-friendly city, because it has got this college and then there is a university. So there are a lot of international students and domestic students who are staying in the city of London. So finding an accommodation is not that difficult. Students from India prefer to stay off campuses. But if you want more information about our residence plans, about our hostel plans, please go to our website fanshawe.ca/residences. वहाँ पे आपको हर एक एरिया में आपको कैसा रेसिडेंस चाहिए उसके पूरे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया।
तो ये ऑफिसर ने जनरली 2 ऑप्शंस बताए, होम स्टे वाला, शेयरिंग, और उनके खुद के हॉस्टल्स वगैरह का भी ऑप्शंस है। लेटेस्ट और चार्जेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विद द फैसिलिटीज़ दे हैव प्रोवाइडेड, वो वेबसाइट पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और वीज़ा के बाद ये आप फैसिलिटीज़ को एंकेश कर सकते हो, वो चार्जेस पेड होके। पहले आपको एडमिशन लेना है फैंशो में, उसके बाद आपको वीज़ा लगाना है। और आप ये ध्यान में रखिए, हर एक रेसिडेंस का एक डेडलाइन होता है वहाँ पर। अगर आपको कॉलेज की तरफ से होम रेसिडेंस चाहिए तो उसका एक डेडलाइन होता है, हॉस्टल का भी एक डेडलाइन होता है क्योंकि उसमें लिमिटेड ऑफ सीट्स होती है रहने के लिए, और होम अकोमोडेशंस का भी एक डेडलाइन होता है। तो आप डेडलाइन अपनी वेबसाइट पे जरूर चेक कीजिए, और डेडलाइन के हिसाब से आपको हॉस्टल का रूम्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगा तो दिया जाएगा, और वैसे ही डेडलाइन के हिसाब से आपको होम अकोमोडेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आप शेयरिंग, जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे रहते हैं उनके साथ आप शेयरिंग के बेस पे भी रह सकते हैं। तो ये हमारा आज का आंसर रहेगा। सर बहुत से ऐसे क्वेश्चन अभी और आते रहेंगे, लेकिन आपका टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है सर, और आपने इतना अच्छा शेयर किया, पूरा एक रिव्यू दे दिया हमको फैंशो के बारे में शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन हमारा भी क्यूरियोसिटी के हिसाब से मेरा एक खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो मैं पूछूं आपको सर? प्लीज 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 अच्छा प्लीज सर, पूछिए। जान 21 के लिए क्या लगता है सर, ये ऑनलाइन रहेगा कि फिर इन क्लास चालू होगा पहले की तरह? देखिए अभी तो मेरे पास इसका एग्जैक्ट कुछ अपडेट नहीं है, लाइक स्पेसिफिक अपडेट, क्योंकि कॉलेज से कुछ नहीं आया है। हमने भी पूछा था कि बट दे आर आल्सो नॉट श्योर कि हाउ द प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड। बट मुझे पर्सनली जो लगता है, यस, कुछ प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे आर वेरी मच अबाइडिंग टू दोज रूल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, तो वो लोग भी नहीं चाहते होंगे कि सारे बच्चे एक साथ जाके in-person classes शुरू कर दे. I am sure that there will be some percentage of the programs which will be delivered online for January. 100% नहीं, कुछ percentage अभी भी online deliver होंगे, but कुछ some of them will be delivered. But Fanshawe College से अभी तक कुछ भी update नहीं है कि कौन से programs online होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या सारे होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी update नहीं है. जैसे हमारे पास कुछ भी update आएगा, our first job is to inform all our partners so that they can inform it to the students as well. So वो हम साथ साथ कर देंगे। थैंक यू परमवीर जी, आपने इतना अपना बिजी टाइम होने के बावजूद आपने ये समय निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये फैंशो के बारे में आपको बहुत बहुत सी चीज़ें बहुत से डिटेल में उन्होंने समझाई। ऐसे ही मोर वीडियो अपडेट के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और डोंट फॉरगेट टू विजिट फैंशो वेबसाइट to check any rules and regulations over there. Thank you once again Paramveer ji, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। Welcome. It was it was a great session, and how I am really hopeful that the students took advantage of all the session. But in near future, if you have any queries, concerns, Matrix is our direct partner. You can be in touch with them. They'll be able to help you with all your queries and concerns. And at the end of the day, Fanshawe is always there. We have our India office. You can write to us, email kijiye hame. We will be happy to help you with your specific queries and concerns. So again, thanks a lot. Please stay safe because this is a very crucial time, and I hope to see all of you at Matrix very, very soon. Yes, sir. Thank you, sir. All right. Bye. Bye.